एक सेकंड में आ रही हूँ। Hi everyone, this is Saloni, your host from Team Pankhuri, and I hope you all are doing absolutely great. So if you all can hear me and you all can see me, just give me a thumbs up in the comment section so we can finally start with our session. Okay? So अगर सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सबको मैं दिखाई दे रही हूँ, तो just give me a thumbs up and then हम लोग अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. Okay? So give me a thumbs up in the comment section. Okay. So before starting the session, there are just few things I want to tell you all about, and then we will start with our session. Okay? कुछ basic चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद हम session जो है वो start करेंगे. Okay? So the session, as you know, like always, the session is going to be in both the languages, that is in Hindi and in English. Okay? पूरा session हिंदी और English दोनों ही languages में होगा. तो language को लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. Second thing is that the PDF of this product and the products of this whole class you will find only and only on the app. If you want to get the PDF or the certificates, you will have to pay us 5 rupees. And you can find it all on Pankhuri app. If in case you haven't registered yourself for this course, you can go down to the description box. The link is given there. You can register yourself for this course and you will get the PDF and the certificates and the products there on the app itself. But remember, you will have to pay us 5 rupees. Okay? So इस जो पूरा का पूरा सेशन है आज का, उसके लिए आपको पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे. सारी चीजें ऐप के ऊपर अपलोडेड हैं. आप ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हैं. बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आज का सेशन है उसका जो पीडीएफ है या जो उसका सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको हमें 5 रुपीज ईच पे करना पड़ेगा. तो आप वहां पर जा करके उसका पीडीएफ एंड सर्टिफिकेट चेकआउट कर सकते हैं. ओके? अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है इस कोर्स के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप सारा सारा सर्टिफिकेट एंड हर चीज को एक्सेस कर सके. Okay. Now the last thing is that if you have any question or queries during the session, you can always let us know in the comment section, and I will take those questions to Arohi, that is our trainer for today, and we will try to solve as many questions as possible. Okay. कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी होगा आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख करके, एंड हम लोग आपकी हेल्प करेंगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में, ताकि किसी को भी किसी भी तरीके का डाउट ना रहे. Now, last thing that is very interesting is that, as you know, there's a competition going on. So that means today also we are going to have two questions. Arohi will be asking you two questions, and the very first person who answers the questions correctly, I'm going to put her on the list. And if you are going to answer maximum questions correct, you might win a hamper from our side on 4th of November. Okay? So as you all know कि आज हमारे यहाँ अभी भी कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, तो आरोही आज 2 क्वेश्चंस पूछेंगी. जो भी उनके सबसे पहले करेक्ट आंसर्स देंगे उनका नाम मैं लिस्ट में डाल दूंगी, एंड जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स देंगे उनको हमारी तरफ से एक हैम्पर मिलेगा. जो विनर है वो 4th of November को अनाउंस होंगे. ओके? सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो यस आरोही, आई थिंक वी कैन स्टार्ट. Hello everyone. Let me just put you in the spotlight. Just a sec. Yeah. Yeah. No. Okay. So now you are in the spotlight, and I think we can start with the session. Hello everyone. I'm Arohi Shadija from Ivana Soap Studio. I am a soap artist. I call myself an artist because soap making is really an art, to be an exact art to be precise. So today we have a very interesting session planned for you. It is popsicle soap making. So basically, what is popsicle soap making? It's handmade soaps in the shape of popsicles. Okay, Saloni. Okay. So आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली पॉप्सिकल सोप मेकिंग पे है. सो पॉप्सिकल सोप मेकिंग, पॉप्सिकल सोप्स क्या होते हैं? बेसिकली पॉप्सिकल सोप्स एक हैंडमेड सोप्स होते हैं
जिनको हम पॉप्सिकल्स के शेप में रखते हैं। पॉप्सिकल्स आपने देखा होगा, वो जो स्टिक वाली आइसक्रीम्स होती हैं, उनको पॉप्सिकल्स बोला जाता है। तो आज हम सोप्स बनाएंगे पॉप्सिकल्स के शेप में। यस आरोही। Okay, so I'll share my screen and we'll start. So these are some of the designs. As you can see, there are so many varieties that we can make. These are some of the design that I have made recently, and some of these designs we'll be seeing in class today. Popsicles are popsicles or ice cream stick soaps are very easy to make, and they are very popular with kids, and very popular as return gift flavors also. So without further ado, let's start first with basics. Why handmade soaps? Okay, you get soaps in the market, but why are we making handmade soaps, and why is there a lot of stress on making handmade soaps? Because these soaps are not mass produced. These are actually soap. These are not detergents that you get in the market. They contain glycerine. Glycerine is very good for the skin. In the mass produced soaps that are available in the market, the saponification process that happens while we make soap, right? Glycerine is produced in this. In the market, that glycerine is taken out of the soaps and used in other products. But in handmade soaps, we do not do that. The glycerine is in the soaps. As a handmade soap maker, we take lot of care in what ingredients we are putting, what colors, what fragrances, what oils we are putting, and you do not know what is in the market soaps. We take full necessary precautions, sterilize all our equipments, and the most important thing that I feel is are the designs. You in the mass produced soaps, that are the market soaps, you cannot get such unique designs like these. You cannot get any such thing from the market, Lux or Godrej or any such things. You cannot get these. You can only get these in handmade soaps. Saloni? या ओके। सो सिंस आज हम सीखने वाले हैंडमेड सोप्स, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हैंडमेड सोप्स हमें बनाना ही क्यों चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है हैंडमेड सोप्स का, वो ये होता है कि जो हमारे सोप्स होते हैं उसमें ग्लिसरीन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जब आप सोपिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि सोप बनाने का प्रोसेस, तो उसमें ग्लिसरीन प्रोड्यूस होता है। जो कि जो मार्केट वाले सोप्स होते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो ग्लिसरीन को निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से सोप्स में बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं रहता है एंड वो आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं। बट जो हैंडमेड सोप्स होते हैं उसमें ये ग्लिसरीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इनको निकाला नहीं जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो काफी अच्छे होते हैं आपके स्किन वगैरह के लिए। प्लस आपको बहुत सारे जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं एंड बहुत अच्छे होते हैं। ओवरऑल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आप अपने आप बना रहे हो इसलिए। सो दे आर वेरी हेल्दी एंड सेफ, बहुत ज्यादा सेफ होते हैं, हेल्दी होते हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से यूज किए जा रहे हैं, स्टेरिलाइज किया जा रहा है, कोई भी अननेचुरल कोई भी फालतू चीजें नहीं डल रही हैं, तो वो काफी ज्यादा हेल्दी एंड सेफ होते हैं। प्लस एक बहुत ही अच्छी चीज जो है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये कि इसमें काफी सारे डिजाइन होते हैं, लाइक काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन होते हैं। अब ऑब्वियसली जो मार्केट में सोप मिलते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं, ठीक वैसे नॉर्मल से ही दिखते हैं, बट जो ये आप सोपिफिक हैंडमेड सोप्स बनाते हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में मिल सकते हैं, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस में मिल सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट चीजें इससे बनती हैं, अभी आप देखेंगे। आरोही इज ग्रेट एट इट। तो या दीज आर सम रीजंस जिनकी वजह से आपको हैंडमेड सोप्स यूज करने चाहिए। यस आरोही। Okay, so handmade soap making is basically of three types. First is the cold process method, second is the hot process method, and the third is the melt and pour soap making. Cold process soap making is something where we take oils and butters and combine it with lye to make soap. These are soap made from scratch. Hot process is also something similar, but
melt and pour soap making is actually a very good option for beginners. What is done is you get pre-made base. Okay, pre-made soap base. You just have to melt the base, add your colors and fragrances and other and other ingredient. Please make sure these ingredients are only dry ingredients, and then you have to pour it in silicone molds like this. Okay. Sorry. Once you are thorough with the basics of melt and pour soap making, then you can go into advanced techniques like the layers and the swirling techniques. The pics I have shown you, these are all the advanced techniques that you can easily do after you get a hang of this basics of melt and pour soap making. Saloni? ओके सो जब हम बात करते हैं हैंडमेड सोप मेकिंग की, तो 3 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं हैंडमेड सोप मेकिंग की. एक होता है कोल्ड प्रेस, एक होता है हॉट पोर मेथड, और एक होता है लास्ट मेल्ट एंड पोर सोप मेकिंग प्रोसेस, जो हम आज करेंगे. जो हमारे कोल्ड प्रोसेस जो होते हैं या हॉट प्रोसेस जो होते हैं, वो एक एडवांस मेकिंग टेक्निक है. जब हम सोप मेकिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब हमें मेल्ट एंड पोर से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज वो बिगिनर्स के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें जो आपका बेस होता है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है. आपको बस उससे सोप बेस को लेकर के उसको मेल्ट करना होता है. उसमें जो भी आप कलर्स ऐड करना चाहो कलर्स ऐड कर सकते हैं, फ्रेग्रेंसेस ऐड कर सकते हैं. बट बस ये चीज ध्यान रखनी होती है कि आप जो भी चीजें इस मेल्ट एंड पोर में ऐड करेंगे वो ड्राई होनी चाहिए. कोई भी फ्रेश या फिर लिक्विड चीज आप नहीं ऐड कर सकते हैं, तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही आपको ऐड करने हैं. इसलिए बिगनर्स के लिए मेल्ट एंड पोर प्रोसेस सबसे अच्छा होता है. जब आप मेल्ट एंड पोर प्रोसेस प्रॉपरली सीख लें, तब आप एडवांस टेक्निक्स जो होती हैं लाइक कोल्ड प्रोसेस या फिर हॉट प्रोसेस, आप उसमें जा सकते हैं. ओके, यस आरोही. Okay, these are the pics that you can see in the slides. These are also melt and pour. Okay, these are melt and pour advanced techniques. So you can also only melt and pour is not very simple. We can do advanced techniques also in that. So just wanted to show you a couple of things that can be done in advanced melt and pour also. Okay. Next, what are the basic requirements before starting? A clean, sterilized workspace. Everything sterilized. All equipments that we are going to be using should be sterilized. A microwave or a double boiler. Okay, a heat-resistant bowl, which can be used in the microwave like this. Okay, a couple of spoon. I would suggest to keep the utensils that you are using in soap making separately and do not use it in your food making. Okay, melt and pour soap base. I will show you the soap base. Then we'll be needing this electric weighing machine. This you can get easily from Amazon for like 300 to 400 rupees, or even in your local market. You'll be needing colors, fragrances, and other dry ingredients, other additives. These colors and fragrances are all cosmetic grade fragrances and colors specifically made for soap making. Okay. Next is we will be needing silicone molds. Please use only silicone molds. We can make in plastic containers, but it will be very difficult to take out and the soaps can get damaged also. One main important thing is isopropyl alcohol, or it is also called rubbing alcohol. That is somewhat a very important ingredient, because as soon as you pour the soap in the mold, it creates bubbles. So to remove these bubbles, we spray a rubbing alcohol. We get rubbing alcohol, and I get it in bulk quantities and store it in small spray bottles to easily use them. And the last is cling film, or any alternative for cling film that you can use. Plastic cling film that we use in the kitchen, that to wrap the soap as soon as we make it, so to prevent soap sweating, because as soon as the melt and pour soap comes into contact with the air, it takes in moisture, so we can see small soap beads, especially in the humid temperature. So we need to wrap them properly. Saloni? ओके, सो अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें बेसिक क्या चीजें चाहिए होंगी जब हम बना रहे होंगे अपना सोप.
अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी पहले हम वो बता देते हैं। सबसे पहले एक क्लीन वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि आपको हर चीज जो आपके पास आप यूज करेंगे वो आपको अच्छे से स्टेरिलाइज करनी है, उसके बाद ही आप यूज करेंगे, ताकि उसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया या कुछ भी ना हो। सेकेंड थिंग जो आपको चाहिए होगा वो होगा या तो एक माइक्रोवेव या तो डबल बॉयलर। डबल बॉयलर क्या होता है हम आपको भी बाद में बता देंगे, एंड देन माइक्रोवेव तो सभी जानते हैं। थर्ड चीज होगी एक हीट रेजिस्टेंट बोल, यानी कि एक ऐसा बोल जिसको आप यूज कर सकेंगे अपने माइक्रोवेव में। ओके, उसके बाद आप कुछ स्पून्स ले सकते हैं क्योंकि हम कुछ चीजें मिक्स करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें आप अपने सोप मेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसको प्लीज अपने किचन में मत यूज करिएगा। अपने सोप मेकिंग के जितने भी बर्तन होंगे उनको आप अलग रखिएगा और अपने किचन वाले बर्तन बिल्कुल अलग रखिएगा। उसके बाद हमें एक मेल्ट एंड पोर बेस चाहिए होगा। बेस अभी जब हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि बेस कैसा दिखता है। उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन चाहिए होगी। ये वेइंग मशीन आपको बहुत इजीली अमेजोन पे मिल जाएगी। आप देखेंगे कि शाम तक सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी ऐप पे आ जाएंगे, तो उसमें भी वेइंग मशीन मेंशन्ड है। उसके बाद आप कलर्स, फ्रेग्रेंस या कोई भी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करना चाहें वो आप इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो सोप के कलर्स होते हैं या जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो कॉस्मेटिक ग्रेड होती हैं, एंड जो आप केक वगैरह में कलर्स वगैरह यूज करते हैं वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके, सोप के लिए बिल्कुल डिफरेंट कलर्स और कॉस्मेटिक ग्रेड के कलर्स आते हैं। उसके बाद फिर आपको सिलिकॉन मोल्ड चाहिए होगा। सिलिकॉन मोल्ड कंपलसरी है क्योंकि उसी से आप अपना सोप निकाल सक पाएंगे अच्छे से। कुछ भी अगर आप और यूज करेंगे किसी भी तरीके का मोल्ड तो आपका सोप खराब हो जाएगा, उसका डिजाइन अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको चाहिए वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर रबिंग अल्कोहल जिसे बोलते हैं। ये आपको इसलिए चाहिए होगा क्योंकि जब आप मेल्ट एंड पोर बेस को जब आप मोल्ड में डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो उन बबल्स को बर्स्ट करने के लिए हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर रबिंग अल्कोहल यूज करना पड़ता है। लास्ट जो हमें चीज चाहिए वो होती है क्लिंच फिल्म, यानी कि आपने देखा होगा कि वो किचन में एक ट्रांसपेरेंट पन्नी जैसी एक शीट होती है ना, वो जो होती है वो हमें यूज करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें अपने जो सोप बनाएंगे उसको पैक करना पड़ेगा। एंड जो ये सोप्स बनते हैं ये बहुत जल्दी मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं मेल्ट एंड पोर वाले, इसलिए जैसे ही सोप बन जाते हैं हमें उनको तुरंत एक क्लिंच फिल्म में रैप करना पड़ता है। एंड या दीज आर ऑल द थिंग्स। यस आरोही। Okay. So, popsicle soap making, as we are doing, these are some of the molds that are available in the market. These are all molds available. Uh, some are from Amazon only, so you can check them out. These are the sticks, normal ice cream sticks that we can use. These comes in many colors, but I would suggest you to use only these white, simple wood sticks like these. Do not use the colorful ones because they seep the colors into the soap also. So just use these plain ones. And there are many variety of popsicle soaps molds available, so you can use them. See, these are all different kind of popsicle soap molds. Apart from these, there are many more variety available from vendors online from Amazon, and even you can check out on your local stores. There also you can get good rates and good variety. Sometimes such unique variety that you won't even get in Amazon also. So let's start with the process. Okay. आरोही, Yeah. yeah, I think we can start with the process of showing them. Yeah, I'll just give me a second and I'll focus on my workspace. Okay. ओके, वर्क्स। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ प्रोसेस देख रहे हैं। ये सेम प्रोसेस अभी हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। अगर आप ये प्रोसेस पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हैं। बाकी यही सेम प्रोसेस अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे। जब तक आरोही अपना पूरा का पूरा वर्क स्पेस सेट कर रही हैं आप देख सकते हैं। ओके, यस, पॉप्सिकल मोल्ड्स आर आल्सो सिलिकॉन। आपको सिलिकॉन वाले पॉप्सिकल मोल्ड्स ही यूज करने हैं, वही यूज करिएगा, अदरवाइज आपका जो सोप है वो अच्छे से नहीं बनेगा।
Arohi, your frame is not in the landscape mode. Yeah, now it is. It I is? think. Yeah. Wait. Yeah, it is. Okay. So first, this is the base. I have cut this base. This base comes to me in large chunks, 1 kg chunks. So I cut them into small equal cubes so that they are easy to melt. This is the cutter that I use. You can use any heavy knife to cut it. And I cut them into small cubes. Now, base is basically available in two types. This is the goat's milk base, if you can see the color. And this is the transparent base. Can you see the difference in the color, Saloni? Yes, Arohi, but can you take both of them in the hand so that it is more Yeah. easily visible? Yeah, just a little on the, yeah, Yeah. perfect. Okay. So you can So see. this is the goat's milk base and this is the glycerine base. Goat's milk base is good for dry skin or normal to dry skin, and goat's milk is good for normal to oily skin. Okay. ओके सो Now, जो बेसेस होते हैं वो दो टाइप के आते हैं, एक होते हैं गोट्स मिल्क बेस और एक होता है ग्लिसरीन बेस। जो व्हाइट कलर का बेस देख रहे थे वो होता है गोट्स मिल्क बेस और दूसरा होता है आपका ग्लिसरीन बेस। गोट्स मिल्क बेस आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन यूज कर सकते हैं एंड जो ग्लिसरीन बेस होता है वो आप ड्राई स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके okay. The first, I'm going to be showing 3 different type of popsicles today. This is the first mold that we are going to use. Okay. For this, this soap, this base, sorry, this mold, each cavity will contain about 100 grams of soap. So what I will do, this is my weighing scale. I will measure 100 grams of soap base in this. I'm using glycerine soap base for this. Okay. Now I am going to melt this in the microwave in 15-second burst. Okay. We have to be very careful that the soap base doesn't burn. Okay. We have to keep checking it after every 15 seconds that it doesn't burn. Okay. We'll be using, these are the soap colors I have in big bottles. I actually get 1 liter bottles and I transfer them into small bottles so that I can use it easily. You even get 10 ml bottles that are very cheap and good for starting. Okay. So it's 30 seconds. My base is melted. If you can see, it has still small chunks left in it. That is good. That means it has not overheated. By the time these small chunks, very, very small chunks melt, my base will cool down to a good temperature. Okay. Because if it is too hot and I add fragrance, the fragrance will start burning. It will not smell good and the soap will not lather properly. Okay. So I'm going to add just 2 to 3 drops. Okay. ओके सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर अपना बेस जो था उसको कट किया, हम लोगों ने माइक्रोवेव में उसको रखा और उसको 15 सेकेंड्स के लिए हम लोगों ने मेल्ट किया। उसके बाद जब वो मेल्ट हो जाएगा उसमें आप कलर ऐड कर सकते हैं। आपका जो बेस है आप देखिएगा बहुत गर्म में ही आप फ्रेग्रेंस ना ऐड करें, अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो फ्रेग्रेंस है वो जलने लगेगा और उसकी अच्छी स्मेल नहीं आएगी। तो जब हल्का सा आपका बेस ठंडा हो जाए तब आप फ्रेग्रेंस ऐड करिएगा। Okay, and now these are fragrance. These are cosmetic grade soap fragrance. This is a floral fragrance. I am adding, the rule of thumb is for 100 grams of soap base, I use 1 ml of fragrance oil.
Okay, you can use 1 to 2 ml, but please don't use more than that. Otherwise, the soap will not set properly. Okay, so this fragrance oil is now properly combined. I am not adding any additives in this, but if you want to add any additives, you can add at this stage. For example, if you are going to make an aloe vera soap, I can add aloe vera extract in this. No fresh ingredients, and even please don't use fresh or dried flowers also. Many people use dried flower, but please don't use them. Okay, they get moldy in the soap. So I'm just pouring this into. Okay, and I'm going to spray. Just, it had some bubbles, so I sprayed isopropyl alcohol or rubbing alcohol on it, and the all the bubbles are now gone. Okay, and now I have to put this stick on this, but for the stick to hold, I am going to wait for like 10 to 15 seconds or maybe a minute also to let the soap set a little bit before adding the stick. Otherwise, the stick will not stand properly. It will go haywire. So I will add it after a minute. Okay, Saloni? ओके सो हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, हम लोगों ने अपना जो सोप बेस है उसको 15 मिनट्स के लिए मेल्ट किया हम लोगों ने माइक्रोवेव में. अगर आप डबल बॉयलर पे मेल्ट कर रहे हैं तो भी आपको अराउंड 20 टू 25 सेकेंड्स ही लगेंगे. जैसे ही आपका पूरा का पूरा बेस मेल्ट हो जाए आप डबल बॉयलर से उसको हटा सकते हैं. उसके बाद उसमें हम लोगों ने कलर्स ऐड किए हैं. जो हम लोगों ने कलर्स ऐड किए हैं वो कॉस्मेटिक ग्रेड सोप बेस कलर्स हैं. हम लोगों ने कलर ऐड किया. उसके बाद हम लोगों ने उसमें फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड किया है. थंब रूल ये होता है फ्रेग्रेंस ऑयल का कि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ सोप बना रहे हैं तो उसमें 1 ml तक आप ऐड कर सकते हैं अपना फ्रेग्रेंस ऑयल. 1 to 2 ml आप ऐड कर सकते हैं. उससे ज्यादा मत करिएगा, अदरवाइज आपका सोप जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगा. ओके, तो हम लोगों ने कलर ऐड कर लिया, हम लोगों ने अपना फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया. इफ इन केस आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रेग्रेंस ऑयल के बाद आप अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं. बट हम अभी यहाँ पे एक नॉर्मल सा बेस बना रहे हैं. सो उसके बाद सब कुछ हो गया. उसके बाद हम लोगों ने उसको डाला अपने मोल्ड में. मोल्ड में डालने के बाद हम वेट करेंगे अराउंड 15 to 30 सेकेंड्स, या आप 1 मिनट तक वेट कर सकते हैं. जब बेस हल्का सा सेट हो जाएगा उसके बाद हम उसमें स्टिक डालेंगे ताकि हमारी स्टिक अच्छे से एक जगह पर प्लेस में रहे. अगर आप स्टार्टिंग में ही जब वो बहुत अच्छे से मेल्ट डाउन रहेगा तो वो इधर उधर हो जाएगा. ओके Okay, so I am keeping this aside, and we are going to start the process for the another popsicle. Okay, I am going to show you first what I'm making so you get an idea of what I'm doing. So this is like a choco bar. Okay, this is a choco bar, what I'm going to make. For this, it has two layers, if you can see. For this, I have melted around 15 grams of white goat's milk. Okay, and I'm going to pour it. I'm just going to keep a support here to give it a little tint, and I'm going to pour it. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना दूसरा बेस बना रहे हैं. तो अभी हम लोगों ने इससे पहले ग्लिसरीन बेस यूज किया था. यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं गोट बेस, गोट मिल्क बेस. या तो उसके लिए आप देख सकते हैं वहाँ पे साइड में हम लोगों ने एक सोप रखा. आरोही आप थोड़ा सा ऊपर दिखा सकते हो वो वाला सोप जो आप बना रहे हो. या अभी हम ये वाला बेस बना रहे हैं, मतलब ये वाला सोप बना रहे हैं. तो आप देख सकते हो इसमें व्हाइट है एंड देन वी हैव ब्राउन. तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अपना जो गोट मिल्क बेस है हम लोगों ने वो लिया है, हल्का सा अपना स्टैंड को टिल्ट किया है और उसमें हम लोगों ने अपना व्हाइट जो है वो डाल दिया है. जो व्हाइट बेस हमारा है वो 15 ml है, आई मीन 15 ग्राम्स है. grams. Yeah. या 15 ग्राम्स है. Okay. For this to set, it will take like not more than
10 to 15 seconds, not more than that. So by the time this is melting, we'll continue with the further process of this only. Okay, this is 80 grams of goat's milk base. Same for this mold will hold up approx 90 grams of 90 to 95 grams of soap base. So 15 ml is this white layer. Now I'm going to melt this 80 gram of soap base. तो जो हमारा अभी ये वाला बेस है ये अराउंड हमारा होल्ड करेगा 90 to 95 ग्राम्स का हमारा एक सोप. तो हम लोग 15 ग्राम्स का सोप जो है हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं. सो जो फर्दर बचा हुआ यानी कि 80 ग्राम्स हम लोग अब 80 ग्राम्स के लिए गर्म करेंगे अपना सोप बेस. हम लोग वापस से जो मिल्क गोट मिल्क बेस है वो यूज कर रहे हैं. उसको हम लोगों ने रख दिया है माइक्रोवेव में अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स के लिए मेल्ट होने के लिए. ओके it has set it. Okay, क्योंकि वो because it was such a small quantity, so I am not doing it on a tilt. Now it has a small hole this side, and I'm going to poke this stick from here. Okay, now my base is melted. This base is melted. I'm going to add brown color in this. I want a bit darker color for the brown, so I'm adding more color. If you want a lighter pastel shade, you can keep it to up to 2 to 3 drops only. Okay. सो नेक्स्ट हमारा जो बेस है वो अच्छे से मेल्ट कर गया है. अब हम लोग उसमें कलर ऐड कर रहे हैं. कलर आप देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे 5 to 6 ड्रॉप्स लिया है क्योंकि हमें एक डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर चाहिए. अगर आप पेस्टल ब्राउन चाहते हैं तो आप 2 से 3 ड्रॉप्स ही डाल सकते हैं अपने पूरे के पूरे बेस में. ओके आरोही, देयर वाज अ क्वेश्चन. Yeah. So Bhavna is asking that, ma'am, we measure the weight of the soap base when it is solid or after melting. Also, can ml indication on utensils be trusted, or we need to use the weighing scale? The weight of the soap is always taken at solid. Okay, before melting it, we'll measure. And no, please don't judge the ml of the container. One of the main requirements of soap making is a weighing scale like this. Okay, it's very cheap, 300 rupees you can get. So please buy one of these. Okay, don't trust the ml in the containers. Okay, now I'm adding this is, I have a very nice chocolate fragrance. It smells amazing. So I'm adding 1 ml of chocolate fragrance in this. Okay, I'll mix this and first pour it, and then I'll tell you something important. Okay, for layers, every time we try to make 2 layers, we always spray isopropyl alcohol between 2 layers to help make them set. If we do not pour isopropyl alcohol, chances are that the soap layers will not stick. Okay, so always pour isopropyl alcohol. And see the bubbles? Okay, now they are mostly gone. Okay, now one interesting thing, if you have noticed, for the white part that I poured, I did not use any fragrance, right? I did not use any fragrance, no color, no fragrance. Why is that? Because I wanted this white part to be extra white. Okay, and if I use a fragrance, see this fragrance color is quite dark. If I use fragrance in this white part, the fragrance will have a sort of color in this white part also, so it will become sort of creamish. And so that's why I poured the whole 1 ml in the dark chocolate brown color only. So this is one of the tip that soap makers use. Okay, Saloni? Yeah, sure. सो हम लोगों ने क्या किया, हमारा वो जो बेस है उसको मेल्ट किया, उसमें हम लोगों ने चॉकलेट फ्रेग्रेंस ऐड की. उसके बाद सिंस हम लोग यहाँ पे 2 लेयर्स बना रहे हैं
तो जब 2 लेयर्स आप बना रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो दोनों लेयर्स अच्छे से स्टिक हो एक दूसरे से। सो उसको अच्छे से, ताकि आपकी सोप की दोनों लेयर्स एक दूसरे में स्टिक हो, आप उसमें यूज करोगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या जिसे हम कहते हैं जेनरिक लैंग्वेज में रबिंग अल्कोहल। सो आप रबिंग अल्कोहल को आप ऐसे स्प्रे करोगे पूरे अपने बेस के ऊपर जो आपने पहले क्रिएट किया है। उसके बाद आप अपना वो चॉकलेट वाला जो बेस है वो डालोगे। इससे आपके दोनों के दोनों जो बेसिस हैं वो अच्छे से एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे एंड वो अलग नहीं होंगे। दूसरी चीज ये कि आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोगों ने पहला वाइट वाला बेस जब डाला था, तो इसमें हम लोगों ने किसी भी तरीके का फ्रेग्रेंस ऑयल नहीं ऐड किया था। सब लोगों ने फ्रेग्रेंस ऑयल इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि आप देख सकते हो फ्रेग्रेंस ऑयल जो है उसमें भी कलर है, एक डार्क कलर है, आप देख सकते हो उसमें। अगर हम ये ऐड कर देते अपने व्हाइट वाले बेस में, तो व्हाइट वाला जो बेस था उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता एंड वो क्रीमिश टाइप का हो जाता। सो जो हम नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारा का सारा जो है फ्रेग्रेंस ऑयल वो हम लोगों ने ऐड किया था हमारे चॉकलेट वाले बेस में। ओके, सो दिस इज वन टिप जो आप यूज कर सकते हैं हमेशा। Okay, by the time this set, we shouldn't move this, but I want to clear my workspace, so I'll be moving this. Okay, you shouldn't move soap before it is set. Okay, and soap cleanup is very nice, very easy actually. Just it is soap, it will wash off very easily. Okay, by the time, okay, so the first soap, I've put the stick in it, and it is holding in it, and it is holding up very nicely. Okay, it will take like 15 to 20 minutes to set. This one is a narrow mold, so it will take more than 15 to 20 minutes to set. This chocolate one that we have used, this will take not more than 10 minutes to set. Okay, so now we'll be doing the third type of soap. So this will be a tie and dye effect. Let me show you the finished piece. Something like this. Okay, see how beautiful this looks. Okay, so for this, I have melted 100 grams of soap base. This mold will hold approximately 100 grams. And what I will do is, I will be using 3 to 4 colors. I will just drop 2, 3 colors, a drop. Okay, not too much. 3, 4, 2 drops or 1 drop of each color is more than enough. Okay. Okay. See? ओके, सो नेक्स्ट यू कैन सी हम जो बनाने जा रहे हैं वो एक टाई एंड डाई इफेक्ट का सोप है। जैसा आपने देखा कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था। सो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो बेस होगा आप उसी में पहले ही थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। अब बहुत ज्यादा कलर मत यूज करिएगा, आप सारे कलर्स के एक एक या दो दो ड्रॉप्स आप इधर उधर डाल सकते हैं अपने मोल्ड में ही, जिससे आपको वो इफेक्ट थोड़ा सा मिल जाएगा टाई एंड डाई का। Okay. So now my base is melted quite nicely. And I'm going to be adding, we have done floral, we have done a chocolate. Now I'm going to add a fruit fragrance. You can also use essential oils, but please be very careful while using essential oils. Some essential oils are not to be used directly on skin, and some essential oils have usage rates, that how much you can use. Okay, so you have to be very careful while using essential oil. So that's why mostly I prefer using fragrance oil. So this is my soap base, and I have added fragrance oil in this, and I have incorporated it very well. Okay, for this soap, especially this soap, I want my soap base to be a little cooler before pouring than what I did in the other two soaps. Okay, the reason is that because if I pour too hot, the colors will all melt together. Okay, so I want it to be a little cooler. I don't want it to be too hot. Saloni? या सो नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हम लोग ने अपना बेस जो है वो अच्छे से यहाँ पर मेल्ट कर लिया है।
अब हम जो हमारा बेस है वो बहुत गर्म ही नहीं डाल देंगे हम अपने मोल्ड में, क्योंकि अगर हम बहुत गरम गरम डाल देंगे तो जितने भी आपके कलर्स हैं वो एक साथ मिक्स हो जाएंगे एंड आपको वो टाई एंड डाई का जो इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। तो आप अपने बेस को जो हल्का सा उसको ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने मोल्ड में, ताकि सारे कलर्स एक साथ मिक्स ना हो। प्लस यहाँ पर जो हम लोगों ने फ्रेग्रेंस ऑयल यूज किया है वो हमारा फ्रूट फ्लेवर का फ्रेग्रेंस ऑयल है। आप चाहें तो एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट एसेंशियल ऑयल्स यूज करना थोड़ी सी एडवांस टेक्निक होती है, बिकॉज कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आप डायरेक्टली स्किन पे नहीं यूज कर सकते हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनको आप बहुत लिमिटेड वे में यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ आपको फ्रेग्रेंस ऑयल्स के बारे में बता रहे हैं, और एसेंशियल ऑयल्स थोड़ा सा एडवांस टेक्निक हो जाती है। तो जब तक आप फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ कंफर्टेबल ना हो जाएं तब तक एसेंशियल ऑयल्स पर मत जाइएगा। यस आरोही। Okay, so now my base is cooled down quite a bit. I'm going to start pouring. Okay, what I can do is a couple of drops at the top. Actually, my AC is on, so this base has cooled down quite too much. So it's not. But what I can do is use isopropyl alcohol to spread the colors. Can you see the difference by using isopropyl alcohol? This is okay. Something like this will come at the base also. This will be the down portion. Okay, and the top portion will have the design. I'll show you if it cool down. Okay, this is after pouring. I'll put the stick in this. Okay, I prefer to put the stick in this mold after pouring, but you can do it before also, no problem. Okay. ओके, सो आपने देखा सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऊपर से भी थोड़े से कलर डाले और उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालकर उन कलर्स को थोड़ा सा स्प्रेड किया। आप स्टिक की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा आरोही को करते हुए। देन हम लोगों ने सबसे लास्ट में उसमें स्टिक ऐड की। जब भी आपका बेस ऐसा होता है, मतलब मोल्ड ऐसा होता है, तो आप पहले भी स्टिक ऐड कर सकते हैं, बट बस आरोही थोड़ा सा बाद में ऐड करना ज्यादा प्रेफर करती हैं। Okay. So this will take a little bit of time. So I'll try to show, I'll keep this aside and we'll wait for it to cool down. By the time, I'll try to show you some more popsicle designs that I've made. See, this is the tie and dye effect that will come. These are all cling wrap. So you can see the lighting on this, but I have to cling wrap, otherwise it will start sweating and it will not look very nice. So this is tie and dye, and all the soaps will be different. All, if I use different colors, the different patterns will be different. Okay, so these are the tie and dye popsicles. These are the first one that we made. Okay, we used a pink color. So this one will be it. You can make many different colors in this. You can use this is the transparent or the glycerine base. You can use the goat's milk base. The colors will be pastel in that. Okay, these are the layers. This I have made in this mold only. Okay, and but I have waited for each layer to set. Then I have poured a rubbing alcohol. Then I have put other layers on this. So it will take quite a bit of time to set, because this mold is taking time to set. Okay, so these layer will take time. And the last I want to show you is this watermelon popsicle. This actually is very cute and is loved by many. This is again a layer soap in the shape or in the design of a watermelon. Saloni. या
So you can see these are all the soaps जो आप different ideas हैं जिस तरीके से आप बना सकते हैं, और ये सारे उन्हीं सेम जो हम लोगों ने मोल्ड्स यूज किए हैं एंड सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने दिखाया है वैसे ही बनते हैं. बस ये डिफरेंट तरीकों से आप मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के आप बना सकते हैं. So these are all the ideas that you can have while making the soaps. Okay. Arohi, there were few questions also. Yeah, just let me get back and Okay, I'll sure. take the questions. Okay. Okay. You can use them normally, how you use your soaps. I know they look so cute that you do not want to use them, but yeah, you can just use them normally. Okay. 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 Yeah. Okay. So there are a few questions. So the very first question is that, ma'am, how can we not use alcohol? As I know that as I'm asking, cause we usually avoid alcohol for skin. See, this is something that will evaporate. This will not touch your skin at all. Okay. And if you are a beginner and you are not looking for selling, don't use it. What will happen is there will be some bubbles, but they are just aesthetic, nothing to do with the soap. So if you do not want to use isopropyl alcohol, please don't use it. And as it is, this will not touch your skin, so you will not be using it on your skin. Okay. ओके. सो जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है वो जनरली जब आप डालेंगे उसके थोड़ी देर बाद ही वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो बिल्कुल आपकी स्किन को टच करने वाला है नहीं. तो अगर आप सेलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं. अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं एंड आप नॉर्मल है वो थोड़े थोड़े से बबल्स के लिए, तो कोई इशू नहीं, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं. ओके. नीतू, वी हैव यूज 100 grams ऑफ बेस हियर. 100 grams ऑफ बेस को हम लोगों ने यहाँ पे मेल्ट किया. And also, Arohi, I must tell you that everybody here is loving your session. They are Thank you really so much. enjoying it. Okay. So there's a question that, ma'am, can we add little bit of cream ingredients in the soap as for the skin requirements? Please repeat, what kind of ingredients? Cream ingredients. Green ingredients. Cream. Green ingredients. Cream. Uh, CREAM. Cream. Cream ingredients. Yeah. No, as I've mentioned a couple of times here, please only use dry ingredients only. Anything water based will rot, mold in the soap. It will reduce the lather. Plus, it will reduce the shelf life. These soaps have a shelf life of upward to 2 years. So, using anything water based will reduce the shelf life of the soap. Okay. There's a question that, ma'am, can we keep these in fridge? No need. Just it will take. See, these popsicle soaps will take a little bit of time. Generally, they will not take too much of time, so no need for refrigerator. As it is winters are coming, they will set in like 10 minutes. So no need for refrigerators. Okay. So, okay, study with channel. The reason why we are cling wrapping it is once the soap will be dried, oh sorry, once they will be cool, you will see that they will start attracting moisture. Okay, they will just start trapping moisture. So, in order to avoid that, we once the soap is all cooled down, we immediately wrap it into the cling wrap. Okay, that's the reason why we use cling wraps here. Okay. So there's a question that, ma'am, what is better, the fragrance oils or the essential oils? Both are equally good. See, essential oils, many people advertise their soaps as essential oil, but these are soaps. We use it and we wash it off. So, no real benefit of essential oil is gained by using it in soaps. In creams, moisturizer, it's a different thing, right? That will get absorbed in the skin. So, essential oils are good in that. But for soaps, it will just wash off, right? So we can use fragrance oil, and even if you use essential oil, that's okay. But please be very careful while using essential oils
because some essential oils have very strict rules about how to be used. So if only if you are well versed in using essential oils, then only use them or have a thorough study before using them. Okay, so there's a question that, ma'am, uh, hmm, how much can we charge for these soaps each? Okay, costing. So this soap base, 1 kg soap base, you will get for around 300, 320, 350. You will get a good quality soap base. Okay, cheaper ones you can get 140, 150. Please don't use them. They are very, very bad, bad chemicals, bad quality, and they will not lather as well. So good quality you'll get 350. Fragrance oil, and so 350 in one soap base, 1 kg soap base. From that you can approximately made 9 to 10 soaps. So each soap will be of 35 rupees. Okay, and adding fragrance oil and colors, everything, not more than 5 rupees. Okay, even if you do fancy packaging and everything, 40 to 42 rupees will be your costing. Now it depends on your clientele what you want to sell. See, you can sell for like 60 rupees also if you want to, or but generally these 100 gram soap sells in the market for like 100 rupees, simple ones, because these are made of such good quality. Okay, so people do pay for this, but depends on your client. So I would suggest around 80 to 100 rupees for a simple. As you progress in design, you can charge more for your work. ओके, सो प्राइसिंग पार्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कैसे मटेरियल यूज कर रहे हैं, कैसा आपका क्लाइंटेल है। फॉर एग्जांपल, आपका जो सोप बेस होता है, 1 kg सोप बेस अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो वो आपको 300 से 350 तक मिल सकता है 1 kg। एंड अगर आप नॉर्मल या लोअर क्वांटिटी में जाते हैं, क्वालिटी में जाते हैं, तो आपको वो 150 तक का भी मिल सकता है, बट वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो लेट्स सपोज आपने 300 वाला जो सोप बेस है आपने वो लिया, एंड उसके बाद आपने उसमें अपने एसेंशियल ऑयल्स ऐड किया, आपने कलर्स ऐड किया, आपने पैकेजिंग की, एंड वो टोटल आपकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो 40 रुपीज की है। 40 to 45 रुपीज की आपकी कॉस्टिंग आ रही है एक सोप की। तो आप उसको सेल कर सकते हैं नॉर्मल मार्केट में अराउंड 100 रुपीज तक के लिए। लोग इतना यूजुअली पे करते हैं आपके होममेड सोप्स के लिए। उसके बाद आप जैसे जैसे उसमें चाहे डिजाइन, अगर आप अच्छी डिजाइन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्टिंग बढ़ा भी सकते हैं। तो आप एज अ बिगनर आप 80 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद जैसे जैसे आपकी टेक्निक्स और एडवांस होती जाएंगी आप अपना वो सब कुछ बढ़ा सकते हैं, एंड उसको और थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंटेल को। ओके, Okay, I would like to show the unmolding of this soap. It's not fully set, fully dry, but I would like to show you people. Let it cool for another maybe 15 to 20 minutes before unmolding it, but I'm doing it. Okay, so it's very easy to unmold. Just pop it like this and remove. It's still a bit soft. So you can look at this, such pretty. And you can make, this is a chocolate choco bar. You can make a mango, an orange, or a strawberry like this, or a peach, or any fruit fragrance you want, or any other design or any other color you can think of. Okay, let's unmold this also. This is unmolding. This is a bit tricky. You have to stretch from all four sides. Okay, and push from down like this. So let it set completely. Yeah. Can you see? Okay. yes, it is absolutely visible. And the third one, I'm not unmolding because I have used a bit more color in that. So it will take a bit more time to set. Because if I will unmold it prematurely, the colors will not come out properly. Okay, I can unmold it, but I don't want to unmold it. Otherwise, the colors will all spread and it will look very bad. So something like this, I've already shown you. This is what we will get. Okay. Okay. Any Yeah. other questions? Yes.
There are a few more questions. Yeah. So there's a question that, ma'am, for the glycerin base, when it sets, it's little soft and rubbery compared to the goat base. Is it something correct or I'm doing something wrong? Uh, Not exactly. Little bit of difference is there. That difference is basically in the melting temperature, but I don't think so. After it cools down, after it sets properly, both should be equal. If you feel that it is a bit soft and rubbery, and there can be two reasons. Either you are using too much of additives. Additives can be all colors, fragrance, and dry ingredient. Either you are using too much of them, or the base is not of good quality. So make sure that this is not these two things are happening to make it good. Okay, so there are a few more questions. Okay, so there's a question that, ma'am, how many seconds would it take to melt down the soap base in a double boiler? In a double boiler, it will take anywhere from 2 minutes to 5 minutes, I guess, depending, because we make the double boiler at sim. Okay, sim पे रख के ही हमें वो double boiler चलाना है, otherwise the soap will start burning. So it will take a bit more time. If you don't have a microwave, then do it in a double boiler. But I would personally suggest to use a microwave. Okay. Chandan, don't worry, you will find all the products on our Pankhuri app, and also you will get the rubbing alcohol or isopropyl alcohol or on any kind of chemical shops or the medical shops quite easily. Okay, so there's a question that, ma'am, how much time will it take to make one complete soap? If you are not counting preparation time, then not more than 10 minutes of making, and let's say 15 to 20 minutes, sorry, 15 to 20 minutes of setting and then packing. So one soap will take, this is like 10 soap together also will take 30 minutes, and one soap will also take 30 minutes. Okay, there's a question that, ma'am, we are getting less foam in the soap. What can we do? Can you please suggest something? Okay, this is quite a common question that I get actually. Handmade soaps give a little bit less lather than the commercial soaps. What is actually first, what is the lather? The lather is a chemical called SLS. So it is very harmful for the skin, and it is not necessary for cleaning. Okay, it is nothing related to cleaning, it is just the bubbles. Okay, so in handmade soaps we do not use any SLS, so we get less lather. But if you're using a good quality base, you will get lather, good lather. Okay, and if you're getting very low lather, that means that you're not using a good quality base and you're using too much of additives. Okay. So there's a question. Okay, sorry. Mohammed, you will find all the products on Pankhuri app by evening 7. Okay? 7 बजे तक आपको सारे के सारे products app पे मिल जाएंगे. Whether it's the color, it's the fragrance, you will find everything there. Okay? So, okay, there's a question. This is a very interesting question. Okay, so there's a question that, ma'am, how can we make the tequila short soap? Okay. See, dear, I could have shown it. I actually don't have the piece currently with me, but it's a very advanced technique. You get molds for the tequila shot glass, but the creativity is all you. So maybe we'll be having some advanced classes in Pankhuri app soon. So I will teach you that, because there are so many different layers in that soap. I can't just verbally speak and tell you. I have to show things practically, and I have to show you to तभी आपको समझ में आएगा actually, and it's a very advanced technique. Okay. So I think that was a good suggestion. So Srishti will try to come up with a session on tequila short soap also, but just on soaps. Just Okay, on soaps. just on soaps. Okay, so there's a question. Can we use herbal powders like turmeric, etc.?
Yes, we can use powders. All dry ingredients we can use. Make sure that they are good quality organic powders, and the quantity that you are using should be very less. Otherwise, the lather, you will not get good lather in the soap. And say like in turmeric, for turmeric powder, just a pinch of turmeric would be good for 100 grams soap. Okay. Meenu, I'll be more than happy to take your question. If I have missed, can you please write it down once again? Yes, all the things on will be available on Pankhuri app. Don't worry. Even the fragrances, everything will be there. Okay, just a second. Okay, so there's a question. That, ma'am, please tell me if there are any ingredients to make soap more effectively, like the glycerine base. um Effective, I don't get. Matlab, what are you looking for? Matlab, you want do you want to make it extra moisturizing, or you want to add each ingredient has its own benefit. Like honey, if you're adding honey, I would suggest to use add honey extract, or use a pre-made honey base. So honey is good for dry skin. You can use a honey base or honey extract for dry skin. So basically you can add other ingredients depending on their quality to make your soap more premium. So like upton powder, you can make an upton powder and add half a teaspoon in 100 grams to make it an upton soap. So it will be a glycerine soap but with the qualities of an upton. Okay. So, okay, I'll quickly answer this one. So, you can store these soaps for up to 1.5 to 2 years. Their expiry date varies from 1.5 to 2 years. And for storing, you can keep them like normal soaps. Just make sure that you are cling wrapping it and you can store them outside just like any other normal soap. Okay. Okay. Let me see. And I think we have given the details of the vendors also in the PDF, right, Yes, Arohi? yes, I have given the vendor details on the PDF also. And I would suggest if you're just starting out and if you want to experiment a little bit, go for Amazon. Buy things from Amazon, a bit pricey, but good things, early delivery. So otherwise, if you want to really get into soap making, then I've given the vendor details also in the PPT. या सो वेंडर डिटेल्स जो हैं वो पीपीटी में दी हुई हैं बट अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो पहले अमेजोन से प्रोडक्ट्स लेकर के आप एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लीजिए जब आप फाइनली सोप मेकिंग में आप एकदम अच्छे से एज अ मतलब ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं तब आप उन वेंडर्स के पास जा सकते हैं दैट विल हेल्प यू ओके एंड यस यू कैन ऐड हनी बट इन फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट नॉट इन फॉर्म ऑफ रॉ हनी Or you get pre-made honey base. You can use that. You get aloe vera base, you get turmeric base, you get all sort of base, you get charcoal base, you get upton base. Use at the different butter bases, you can use those things. अगर आप नहीं डालना चाहते हो कोई भी चीज, if you're not sure कि कितनी डालनी चाहिए या क्या डालना चाहिए या how to do it, you just get pre-made bases of the same. ओके So yes, I think it is overtime and we have answered most of the questions. So if there are any more questions left, you can always let us know on the Pankhuri app and the team is there. We will be answering everything there so that you would not have any issues. Okay. So थोड़ा सा ओवर टाइम हो चुके हैं हम लोग अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस बच गए हों हम लोग ने सारे आंसर्स ऐसे दे दिए हैं अगर कुछ भी बच गया है तो आप ऐप के ऊपर पूछ सकते हैं we'll be more than happy to help you. Okay. So, yes, Arohi, thank you so much for joining us today. It was a great session. Everybody here loved you, and I am in love with all your soaps that you make. You already Thank know that. you. Thank you, Saloni, for being a great host. Thank you. Thank you so much. And yes, ladies, I want to know for one last time that did you all enjoy today's session? आज का सेशन कैसा लगा सबको एवरीबडी जस्ट कमेंट डाउन हियर सो दैट आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आरोही वंस ओके सब जल्दी से यहाँ पर लिख के मुझे बताएंगे कि सेशन कैसा लगा ताकि मैं जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लूँ और मैं आरोही को भेज सकूँ एंड आई कुड लेट हर नो कि कितना अच्छा उनका सेशन था Saloni, the questions?
Actually, the questions are done. We have Okay, taken all the questions. okay, great. Yeah. I'll quickly take a screenshot and I will send you all the beautiful comments that are coming down here. Oh, looks like I need to record it. काफी सारे आ गए. Just a It was second. great to have a session with such an interactive audience. I hope to see all of you in more sessions of Pankhuri soon. If any further questions, please do connect with me and through Pankhuri, and I will be happy to answer all your questions. Thank you so much. Thank you so much, Arohi. It was great having you. And thank you so much, everyone, for being here. And I hope to see you all in some other classes. We come live every twice a week. So do subscribe to the YouTube channel. If you have any more suggestions, comment down below. We'll be more than happy to come up with more classes. Until then, bye bye. Take care. Have a great day, guys. Bye. Bye, Arohi. Bye, and a happy Diwali, guys. Yes, happy Diwali, guys. Diwali is around the corner. So yeah, ये soaps बनाइए and just take a picture, upload it on Pankhuri app, upload it on social media, tag Arohi, tag us Pankhuri so that we can also see. Okay? Oh wait. Yeah, sure. Arohi, we forgot about the contest wale question. Yeah, that was I was asking. I'm so sorry. I'm so sorry. I thought those. Yeah, No contest questions actually. yeah, the Okay. contest question. Okay. Okay, so the first question is, what are the three basic types of handmade soap making? I have already explained in detail, so I just want you to write the three processes of soap making. Okay, and the second question is, we Wait, talked wait, so wait, much. wait, wait, wait. Okay, Let them sorry. answer for the first question. Okay. So the first question is कि what are the three types of making soap? सोप बनाने के तीन कौन से तरीके हैं? आरोही ने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, तो let us know. Okay. Okay. I can see few answers coming in. Don't answer like ऐसे एक एक स्टेप नहीं करके करो वरना वैसे दिक्कत हो जाएगी. आप एक साथ तीनों को लिख दीजिए and then we will get the answer. Okay. Okay, we have got few answers here. So yes, Arohi, I think we can move back to the second question. Okay, the second question is, we talked about isopropyl alcohol or rubbing alcohol. What is the main use? You can, I mentioned a couple of uses. What is the main or one of the uses of isopropyl alcohol? Yes, so isopropyl alcohol या rubbing alcohol का सबसे main use क्या होता है? Tell us. Okay, I can see few answers coming in. Okay. जल्दी. इससे पता चल जाएगा कि हमारा सेशन किसने देखा, किसने नहीं देखा, कौन टीवी देख रहा था, कौन हमारा सेशन देख रहा था. सही में. अब हमें पता चल जाएगा कौन अच्छे से देख रहा था. Okay. Okay. So I think a lot of people here have answered the questions. So I will quickly let everybody know कि किसने correct answers दिया सबसे पहले. वैसे तो सबने सही answers दिए हैं बिल्कुल. You all have answered all the questions absolutely correctly. I'm going to tell you who has answered first. सबसे पहले किसने answer किया? So जो first question था उसको सबसे पहले answer किया था निकिता भंडारी ने. And जो second question था उसको answer किया था जीवन ने. Now we will need little bit of details. So you all can like Nikita Bhandari and Jeevan, आप लोग मुझे अपने details भेज सकते हैं on the customer support chat number which is given in the description box, or you can send us your details on our Instagram or on Facebook, that is Ask Pankhuri. Okay, so Nikita and Jeevan, you can send me your details on Instagram or here on this. Okay. So yes, these were the two questions, and I hope, and I think सबने सही आंसर दिया था. सबने बहुत अच्छे से आपका सेशन लिया रही. I must say. Great. Okay, so I think we can finally end the question. So yes, thank you so much, Arohi, and thank you so much everyone for joining us. And I hope to see you all in some other courses. Bye bye. Bye, Bye. Arohi. Bye.